ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा जो सेशन है वो पाइथन के ऊपर रहेगा। विल इट विल बी लाइक वन वे सेशन, नॉट अ वर्कशॉप। यू कैन कंसिडर इट एज अ वेबिनार। ठीक, तो आई विल इंस्ट्रक्ट यू थिंग्स। ओके, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सो वी हैव अराउंड 2 hours ऑफ सेशन. After an hour, we'll take a short break of 5 minutes, and we'll then resume and try to finish as much topics as we can. मेन एजेंडा है आज के सेशन का कि हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली पाइथन का यूज करके व्हाट आर द कंटेंट्स इन पाइथन एंड व्हाट वी कैन डू यूजिंग दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, वी एट CIA वी कंसिडर पाइथन एज अ टूल टू अंडरस्टैंड कोडिंग. ठीक है, अगर कोडिंग सीखनी है तो सबसे बेस्ट टूल जो है वो हम पाइथन को कंसिडर करते हैं. एंड लिनक्स के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे, फोकस करेंगे कि लिनक्स के ऊपर पाइथन का यूज करके हम कैसे कोड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप द एजेंडा इज क्लियर फॉर नेक्स्ट 2 hours. इफ यू आर नॉट लाइक आपको अगर बहुत सारी चीजें अगर एक वन टाइम में समझ में नहीं आएगी, सो यू कैन जस्ट रेफर दी रिकॉर्डिंग्स. ठीक, ये वीडियो को आप रेफर कर सकते हो एंड यू कैन देन रीट्राई द सेम थिंग ऑन योर कंप्यूटर एंड पॉज करके आप बार बार वो सारे प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हो. ठीक, सो विल ट्राई टू टच ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज अवेलेबल इन पाइथन. एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे याद है, सो आई वोंट टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, बट इन सम केसेस आई माइट हैव फॉरगॉट फ्यू थिंग्स. तो उस केस में मैं गूगल कैसे करते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दैट हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय जस्ट गूगलिंग इट. Okay, so my screen is visible and voice is also like clear. Please confirm, guys. Yes, sir. Okay, thank you, madam. So now we'll start with this Python programming language. What is this? First of all, why this programming language came into picture? See, computer is the dumbest thing in the world. Okay, computer is the dumbest thing in the world. कुछ नहीं पता कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है. ये सारी चीजें हार्डवेयर पे रन होती है, बट इट डजंट नो हाउ टू वर्क विथ लाइक नंबर्स, कैलकुलेशंस एंड ऑल. सो हु डज ऑल दिस थिंग? तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग एक तरह से प्रोग्राम फिट करते हैं. ओके, वी क्रिएट कोड्स, लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. वो सारे कोड्स को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड करके रखते हैं. एंड दोस कोड्स, एक तरह से मॉडल जो रहता है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड उसके हिसाब से वो कंप्यूटर वर्क करना चालू करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पावर बटन का इवेंट अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, पावर बटन को क्लिक करता हूँ, so then computer knows कि power button click हुई है. Now I need to start booting. Okay, we call it as a cold booting. Okay, cool booting or cold booting. Okay, there is something called as hot booting also. So hot booting का मतलब है कि रिस्टार्ट करना. आपका रैम जब गर्म रहता है, हॉट रहता है रैम, तो उस केस में उसको हॉट बूटिंग कहते हैं. ठीक, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं तो उस हिसाब से वो प्रोसेस करता है. अब ये बूटिंग के लिए भी कोड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, टू फेच ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स, उसको हार्ड डिस्क से वो फेच करके हम लोग कहाँ पर लेकर आते हैं, हम लोग लेकर आते हैं रैम के अंदर. मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने का. वेब वाइट, ओके. सो लेट्स से आपने पावर बटन को क्लिक कर दिया. ठीक है, इट विल कंसिडर एज 10. पावर बटन ऐसे दिखता है 10. सो जैसे आपने पावर बटन पे क्लिक किया, ये क्या करता है, HDD और SSD, और इन न्यूअर कंप्यूटर यू कैन सी M2 एज वेल. ठीक है, तो ये दिस आर द काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, नॉन वोलाटाइल. ओके, नॉन
what computer does when you click on this power button, ये यहां से पूरा का पूरा डेटा लोड करता है किसके अंदर गाइस, रैम के अंदर। ठीक, यहाँ पर आपकी ओएस कहाँ पे रहेगी जनरली, लेट से विंडोज ओएस हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, मैक ओएस हो सकती है। तो ये हार्ड डिस्क के अंदर से लोड करता है रैम के अंदर। अब रैम के अंदर एक बार लोड हो गई, देन जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करने हैं, वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने का काम कौन करता है गाइस, माइक्रो प्रोसेसर। इट्स जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कंप्यूटर के अंदर सभी की सभी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से ही होती है। यहाँ पर ALP आई थिंक अरिथमेटिकल, ALU लॉजिकल यूनिट वगैरह ये होता है यहाँ पर। ठीक, सो आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जो ओएस है वो लोड करने के वक्त अगर रैम, इफ रैम इज लाइक फुल, तो उस चीज को बोलेंगे हम और कोल्ड बूटिंग। ठीक है, और आप कभी भी अगर रिस्टार्ट करते हैं, ठीक, तो रैम उस समय हॉट रहती है, तो वी विल से हॉट बूटिंग। ओके, रिस्टार्ट करने के बाद ऐसा होता है। तो कंप्यूटर के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब ओएस मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस ओएस? ओएस इज अ बिग सेट। ओके, ओएस के अंदर क्या हो सकते हैं गाइस, आपके प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट कोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कोड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन टुगेदर, ठीक है, ये एन नंबर ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एंड कोड्स होते हैं, इसी से मिलके क्या बनता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज, लिनक्स एंड मैक, ऐसे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर। फाइन, सो कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता, बट आप लोग जो सॉफ्टवेयर लिखते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर लिखते हो बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, तब वो जाके क्या करता है, सारी की सारी चीजें प्रोसेस करता है। ठीक है, देन इट ओनली प्रोसेसेस। सो ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स है गाइस। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसका यूज करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, आई जनरली यूज द टर्मिनोलॉजी टर्म टेक्नोलॉजी। ओके, सो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है गाइस, सी है, C++ है, पाइथन है, पर्ल है, गो है, जावा है, ठीक, सी शार्प है, फिर अपना जे शार्प इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल टेक्नोलॉजीज जिसका यूज करके आप क्या बना सकते हो गाइस, आप बना सकते हो सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बट इन सब में सबसे इजीएस्ट और यू कैन से सबसे पावरफुल भी, which tool is there is something called as python. तो python most popular टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं गाइस, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, एंड छोटे छोटे कोड्स लिखेंगे हम, वो कोड्स मिलके क्या बनेगा गाइस, प्रोग्राम बनेगा। फाइन, एंड वो प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम्स मिलके क्या बनता है गाइस, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, तो हम स्मॉल स्मॉल कोड्स लिखने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ओके, और ये पाइथन हम रन किस पे करने वाले हैं गाइस, पाइथन हम रन किस पे करने वाले, मिराया टेल मी, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर गोइंग, Linux. लिनक्स। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम रन करने वाले हैं पाइथन के कोर्स। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट SSH कनेक्शन। ओके, SSH कनेक्शन करके हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं हमारे सर्वर पे। सो यहाँ पर SSH, so I'll log in with this user. Now, why should we use Linux for development purpose? See,
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा है, काफी पावरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में बहुत सारी चीजें फास्ट चलती है, ठीक है। एंड एज अ डेवलपर वी शुड मोर फोकस ऑन परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कैन से यूआई पार्ट, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ज्यादा हमें परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है एज अ डेवलपर, ओके। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस लिनक्स। लिनक्स इज वेरी फास्ट एंड सिक्योर एज वेल, ओके। तो यहाँ पर हम लिनक्स पे कनेक्ट कर रहे हैं and this is an operating system provided by DigitalOcean। तो ये क्लाउड पर है, दिस सिस्टम इज अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड वहां पे हम लोग कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात एज वेल, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान एज वेल। सो सभी जगह से लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लाउड कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग। लेट्स सी हु ऑल आर लॉग्ड इन। सो यहाँ पर जूही, दैट इज माय नेम, Miraya is there and Shubhangi is there. They all are logged in to the system and वो अलग अलग लोकेशन से। So this you can see यहाँ पर जो IP addresses है, these are from different region, okay? So अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल फोल्डर बनाएंगे www.html एंड हम खुद के फोल्डर के अंदर जाते हैं एंड मैं mkdir oct python, ठीक है, अक्टूबर पाइथन ऐसा फोल्डर बना देता हूँ। Let's get into that folder, October Python. Now we'll go and just follow our checklist. ठीक है, हमारे checklist को check करें। So here we have introduction, installation we don't need because we have already installed. So first of all, a playground, ठीक? First of all, a playground. तो लिनक्स के अंदर या फिर विंडोज के अंदर भी आइडियली, जनरली वी कॉल इट एज IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट इट प्रोवाइड्स, ओके। तो अगर मैं पाइथन 3 एंड एंटर प्रेस करता हूं तो इट इज गिविंग मी सम लाइक प्लेग्राउंड वेयर आई कैन टाइप डायरेक्टली टाइप द कोड एंड इट विल रन, ओके, विदाउट सेविंग द फाइल, ओके, विदाउट क्रिएटिंग अ फाइल। सो हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड। So we can simply say कि ये वर्क कर रहा है, उसका आउटपुट वहां पर शो कर रहा है। लेट्स से मुझे कुछ कैलकुलेशन करके देखना है, दैट इज आल्सो वर्किंग, ओके। एंड इफ आई वांट टू यूज सम वेरिएबल्स, लेट्स से x equals to 5, y equals to 6, z equals to let's say x plus y, and in this case if I want to print its value तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से हार्ड कोडेड में x plus y equals to z एंड इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है। सम ऑफ यू गाइज आर फैमिलियर विद दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, हम इसको डिटेल में भी देखेंगे बाद में। जस्ट आई एम शोइंग यू द पॉसिबिलिटी हाउ कैन वी यूज डायरेक्टली यूज द कोड इनसाइड द प्लेग्राउंड, आइडियली प्लेग्राउंड, ओके। आइडियली का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस प्लेग्राउंड। फाइन, स्ट्रिंग multiplication, this is also a very cool feature available in Python. So मैं Control L से clear कर देता हूँ and let's try to multiply the string. Let's say hello world and multiplied by, let's say 10, multiplied by 10. इसको enter करते हैं। Now you can see it is simply showing hello world 10 times. And what if I want to show it in new line? Then I can simply say /n, okay, I can simply say /n. तो /n से क्या हो जाएगा, वो हर बार न्यू लाइन में शो होगा, ठीक। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज, अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसे जस्ट प्रिंट करनी है, ओके, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। मोस्टली पीपल यूज दिस फॉर लेट्स से आउटपुट, ओके। लेट्स से स्टार मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो इस केस में ऐसा वो प्रिंट करके रखते हैं, ठीक। लेट्स से मुझे इक्वल्स टू 10 टाइम्स प्रिंट करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आपको बार बार वो चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मेटिंग में या फिर कुछ विजुअलाइज आपको दिखाना है ग्राफिक, अच्छा ग्राफिक्स के साथ, तो इन दैट केस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन, ओके। द नेक्स्ट वन इज कमेंट. If I don't want to execute any statement, what I can do, I can make use of this single line command, okay. कोई भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी है, बट मुझे वहां पे रखनी है। लेट्स से कोई इंस्ट्रक्शन है,
Okay, this is sample 1 comment. Okay, तो वो चीज कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक, अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, सो इट विल बी कंसिडर एज इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये पाइथन के इंस्ट्रक्शंस के जैसा उसको ट्रीट करेगा, एंड इन दैट केस इट विल स्टॉप योर प्रोग्राम। ओके, इट विल टर्मिनेट योर प्रोग्राम। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स, इट इज शोइंग इनवैलिड सिंटैक्स होगी। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट देनी है तो हैश का यूज कर सकते हैं आप, और मल्टी लाइन कमेंट देनी है सो ट्रिपल कोट। ओके, दिस is multi-line comment. Okay, so that's how you can make use of this multi-line comment. तो किसी भी कोड के अंदर आपको अगर 2-3 लाइन का कमेंट्स अगर मेंशन करना है, या फिर इफ यू वांट टू राइट लेट्स से डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कोड, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट या फिर 3 बार सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो। ओके, concatenation operator plus, okay, concatenation operator plus, what does it mean? अगर मुझे स्टेटमेंट्स को कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है, एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ जोड़ना है, 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन मेक यूज ऑफ, वी कैन यूज the plus symbol. Okay, plus operator, we can consider it as a concatenation operator in Python. Okay, let's say I have a number num equals to 5. Okay, num equals to 5, and if I want to print it's num into num, it's square, तो हम क्या करेंगे, num into num. Now customer has raised the request or user has raised the request, he wants output like square of number, square of 5 is 25. He wants output like this. So in that case what you can use, you can make use of this concatenation operator. कैसे? सबसे पहले तो as it is output लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, as it is output लिख दो, इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, as it is output अगर आ रहा है तो उसके बाद हम इसको अभी डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो 5 निकालेंगे और वहां पे डबल कोट डाल देंगे, एंड देन प्लस प्लस सिंबल फॉर कॉन्केटेनेशन एंड द वैल्यू ऑफ नम। ओके, द वैल्यू ऑफ नम, लेट मी जस्ट, ओके, सो इन दिस केस वी नीड टू यूज str as well. Okay, we need to use str as well. So उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन क्योंकि स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन होता है, ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन के लिए यूज करेंगे। नाउ 25 निकाल के मुझे वहां पर डालना है नम इंटू नम, तो मैं इसको निकाल दूंगा, प्लस इज अ सिंबल फॉर कॉन्केटेनेशन, एंड इन दिस केस व्हाट आई कैन डू, str num इंटू num। ओके, एंड नम की वैल्यू थोड़ी चेंज करके देखते हैं हम, एंड फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यू कैन सी इट इज शोइंग मी अ डायनेमिक, ठीक, बट दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर वाला जो चीज है वो बहुत ही डिफिकल्ट है राइट करना, रिमेंबर करना, कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट करना है उस केस में भी बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई द वेरी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इज what we can say, formatted string. तो formatted string is the very best way. Okay, so हम लोग formatted string में क्या करते हैं, simply print, let's say मुझे same output चाहिए, square of 5 is 25. Okay, तो in that case अभी क्या कर दूंगा, f यहाँ पे insert करूंगा, ठीक है, before string, and यहाँ पर लिख दूंगा मैं num, and 25 निकाल के I would say num into, okay, 25 निकाल के I would say num into num. So this will also work. तो ये easiest way है, okay, and this is like more specific while we are using the programming language. किसी भी programming language में concatenation कर रहे हैं तो this type of conditions बहुत बार आती है, तो उस केस में आप ये formatted string अगर वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, so make use of this feature. Okay, instead of concatenation प्लस 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 का यूज करने की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ वी यूज कॉन्केटेनेशन।
नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल्स. अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से है और कैसे यूज करते हैं वो चीज देखते हैं. सो वेरिएबल मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली देखते हैं. सी गाइस, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम माइंड में भी वेरिएबल्स क्रिएट करके रखते हैं. हम अपने माइंड में भी वेरिएबल्स क्रिएट करके रखते हैं. लेट्स से मैं आपको एक नंबर देता हूँ. ओके, लेट्स से 5 नंबर. इफ आई हैव गिवन यू अ नंबर 5, तो उस केस में आपने क्या करना है, माइंड में वो 5 स्टोर करके रखना है. से एक्स. ओके, एक्स के अंदर मैं 5 स्टोर करके रख देता हूँ. मैं एक और नंबर देता हूँ आपको थोड़ी देर में. लेट्स से मैंने एक नेक्स्ट नंबर दिया 7. ओके, तो आपने माइंड में क्या किया, अपने आप, मतलब यू डोंट इवन नीड टू रिमेम्बर इट एज अ वाई और एक्स. आप लोग ऐसे माइंड में रखते थे. अब मैं आपको बोलता हूँ कि 2 नंबर की एडिशन और 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन अपने पास रखो. तो इन दैट केस ऑल्सो यू क्रिएट सम मेमोरी. ओके, यू असाइन सम स्पेस, एंड उस केस में आप लेट्स से उन दोनों की सम भी निकाल के अपने पास रखते हो. ठीक है, 5 और 7 12, एंड दोनों का डिफरेंस -2. ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज -2. तो ऐसे माइंड में आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो. अब यही सारी चीजें, कंप्यूटर तो डम्ब है, कंप्यूटर को बोलो तो वो खुद थोड़ी ना करेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है. उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे हमें इंस्ट्रक्शंस वैसे लिखने पड़ेगी. तब जाके उसको वो पता चलता है कि हाँ मुझे एडिशन करना है, और एडिशन का फॉर्मूला भी आपने बताना पड़ता है. अगर कंप्यूटर ही स्मार्ट होता तो वो खुद ही कर लेता, बट नो, कंप्यूटर इज नॉट स्मार्ट. इट्स ह्यूमन हु इज मेकिंग इट स्मार्ट. ओके, वो ह्यूमंस है जो उसको स्मार्ट बना रहे हैं कंप्यूटर. तो इन दैट केस हाउ कैन यू राइट द कोड फॉर दिस. आपको क्या करना है, सिंपली लेट्स से x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 6, sum equals to x plus y, subtract x equals to x minus y. ठीक है, अभी इस सम को प्रिंट करके देखते हैं और सब्ट्रैक्ट को भी प्रिंट करके देखते हैं. सो इट इज गिविंग ओके 5 and 6, नो इशू. x minus 7 हो गया. subtract minus sub. ओके, सो -1 इट इज गिविंग. ओके, नाउ थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करते हैं, y इक्वल्स टू 7 करते हैं. एंड नाउ अगेन रन दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला. सम, subtract. Now run the sum value of sum and subtract. So in this case now it is working very fine. So यहाँ पर अभी ये जो हमने किया, y की वैल्यू पहले 6 थी, उसको चेंज करके 7 कर दिया. So what we have done, we have modified the value of y. Okay, we have modified the value of y. So variable is nothing but a value which is able to vary. Okay, value which is able to vary is nothing but called as variable. Clear hai guys? Value which is able to vary is nothing but called as variable. Okay, तो इसको अगर रीड करना है, ठीक है, x इक्वल्स टू 5, तो रीड कैसे करेंगे, x is a variable which contains constant, contains constant value 5. ओके, तो ये 5 जो है ये इसको असाइन हो जाएगा x को. ठीक है, एंड 5 इज अ कांस्टेंट. x इज अ वेरिएबल बट 5 इज अ कांस्टेंट. 5 पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में 5 ही रहेगा, वो कभी 6 नहीं बनेगा, क्योंकि 6 की जगह 6 लेगा, राइट, 4 की जगह 4 लेगा. बट दिस x कल चल के 6 भी हो सकता है, x कल चल के 7 भी हो सकता है. ठीक, तो x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हो. आप इसको ये भी बोल सकते हो, वैल्यू की जगह आप इसको और एक टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर सकते हो गाइस, स्टेट. एक्स की स्टेट क्या है, ठीक है, जैसे मुंबई का टेम्परेचर क्या है, नागपुर का टेम्परेचर क्या है वहां का टेम्परेचर का स्टेट. ठीक, तो लेट्स से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे आप क्या बोल सकते हो, उसको स्टेट भी यूज कर सकते हो टर्मिनोलॉजी इंस्टेड ऑफ वैल्यू. ओके, सो अब इसका जो टाइप है, ठीक है, एक्स या फिर वो नंबर का टाइप है, वो कैसे क्या चेक करेंगे, मैं यहाँ पर लिख के देखता हूँ. टाइप ऑफ लेट्स से 5,
नाउ इट इज शोइंग इंट. ओके, इट इज शोइंग इंट. अगर मैं 5.5 करता हूं, सो इट इज शोइंग गाइस फ्लोट. ओके, अगर और एक टाइप है, जैसे कि मैं दे देता हूं ट्रू, तो इन दैट केस व्हाट इट इज सेइंग, boolean. Okay, bool is nothing but for boolean. Okay, let's say मैं एरे टाइप ट्राई करके देखता हूँ, 1,4,5. ठीक है, इट इज शोइंग लिस्ट. ओके, इट इज शोइंग लिस्ट. सो ऐसे बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो. फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग ऑल्सो. ठीक है, मोस्ट पॉपुलर इज दिस इंटीजर एंड स्ट्रिंग. तो यहाँ पर अभी ट्राई करके देखते हैं. लेट्स से okay, type of string is str. okay, hello world. none. okay, ट्राई करके देखते हैं none के लिए. ठीक है, none type. ओके, none is also a value. none वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको. फाइन, बाकी सारे डेटा टाइप्स, आपको सिर्फ दो टाइप्स सबसे ज्यादा यहाँ यूज होने वाले. फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज दिस स्ट्रिंग. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये दो ही टाइप्स के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. ठीक, तो मैं नन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. लेट्स से I want to store a value. okay, I want to store a value, but मुझे I want to take a variable, but मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी वैल्यू आने वाली है. सो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नन वैल्यू असाइन कर सकता हूँ. y इक्वल्स टू नन. तो इन दिस केस अब ये रैम के अंदर पता है क्या करता है, ये रैम के अंदर x के लिए ऐसा अलग से नन और y के लिए अलग से नन ऐसा नहीं करता है. ये क्या करता है, सिंपली ये सिंपली जस्ट अ सेकंड, ये सिंपली क्या करता है, रैम के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर जो बाय डिफॉल्ट नन रहता है, ठीक है, उसको असाइन हो जाती है ये सारी वैल्यूज. ठीक है, y, ठीक है, y भी उसी को पॉइंट करता है और x भी उसी को पॉइंट करता है. तो क्या होता है कि आपकी स्पेस बहुत ज्यादा सेव हो जाती है, क्योंकि नन इज नन, नन कांट बी चेंज. ठीक, तो इन केस ऑफ जावा वी कॉल इट एज नल. ओके, इन केस ऑफ जावा वी कॉल इट एज नल, एंड आई थिंक इन MySQL ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज नल. ठीक, तो पाइथन में अगर आपको ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट करना है वेयर यू डोंट नो कि उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो उस केस में आप उस वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हो गाइस, नन वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, टाइप. सो टाइप फंक्शन तो हमने देख ही लिया. यू कैन यूज दिस टाइप फंक्शन, इसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं. नाउ वेरिएबल्स आईडी एंड इज ऑपरेटर. ओके, ये वाला एक चेक करके देखते हैं. ठीक, ये आई थिंक कंपैरिजन के लिए यूज होता है. लेट्स से x इज इंट फॉल्स. ठीक है, id of x, let me check. So x equals to 5, x is int, ऐसा करके देखते हैं. So still it is showing me false. Let me check what is the use of this is and id operator Python. Okay, is or id operator. Okay, returns true if both variables are the same object. Okay, are the same object. Okay, एक बार ट्राई करके देखते हैं. x equals to 5, y equals to x. Okay, now x is y. Okay, ये ट्रू दिखा रहा है. अब z equals to 5 डाल के देखते हैं and then say x is z. ठीक है, इट इज शोइंग मी ट्रू. तो दोनों भी एक ही जैसे ऑब्जेक्ट है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. ओके, अब नॉट के लिए चेक करते हैं. ठीक, सो x इज नॉट y, x इज नॉट z. ठीक है, इस केस में प्रॉपर्ली फॉल्स है.
ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली कोर पार्ट, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज्यादा यूज नहीं करने वाला है। सो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज समझ में नहीं आती है, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये एक ऑपरेटर है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, एक्स इज और इज नॉट, ठीक है, इज और इज नॉट। अब एक आईडी के बारे में देखते हैं, वेयर इज द आईडी ऑपरेटर। ओके, आईडी इज अ फंक्शन, ओके, तो देखते हैं आईडी एक्स। सो एक्स का आईडी ये शो कर रहा है, एंड लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दिस। देखो तो दोनों केस में वो क्या कर रहा है, एक ही जगह पॉइंट कर रहा है गाइस, एक ही जगह पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो सेम आईडी शो कर रहा है। लेट्स से अभी y इक्वल्स टू 20 देकर ट्राई करते हैं, एंड आईडी ऑफ x फिर से चेक कर लेते हैं गाइस, एंड आईडी ऑफ y भी चेक कर लेते हैं फिर से। तो इट नाउ इट इज शोइंग अ डिफरेंट आईडी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अभी 5 है एंड y की वैल्यू डिफरेंट है। y की वैल्यू फिर से मॉडिफाई करके 5 करते, लेट्स ट्राई टू गेट द आईडी ऑफ y। तो इन दिस केस इट इज शोइंग मी सेम। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट वाला जो चीज है गाइस बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। अगर सेम वैल्यू मिल रही है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ पॉइंट करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आईडी विल गिव मी द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ओके। अगर सेम वैल्यू असाइन है, वहां पर दो वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन है, तो वो दोनों भी पॉइंट करेंगे एक ही जगह पर, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन जो कोड है वो सेम रहेगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक, जब आपका इंटरव्यू रहेगा तब आपसे पूछी जा सकती है। इन प्रोग्रामिंग वी रेयरली यूज दिस थिंग, क्योंकि हम इतना ज्यादा लेवल पे हम सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करते इनिशियल लेवल पे, ओके। बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली, इन फ्यूचर अगर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ सकती है। फाइन। Now next thing, the 10th one is operators. Okay, for these operators I will give you some classwork here. Okay, और मैं एक ऑनलाइन लिंक भी आपको शेयर करूंगा जिसमें आप ये प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो ऑपरेटर्स के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 9 एंड z इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक। तो इसका अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, सो हाउ कैन आई प्रिंट दैट आउटपुट, आई कैन मेक यूज ऑफ दिस x प्लस y इक्वल्स टू z, ठीक। तो ये मुझे प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है, ठीक। नाउ यू गाइज नीड टू ट्राई subtraction, multiplication, okay, division, okay, subtraction, multiplication, division in like online editor, online GDB, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर है इसलिए हम ऑनलाइन एडिटर में यूज करेंगे, ठीक है। जिन लोगों के पास सिस्टम सर्वर का एक्सेस है CI क्लाउड का, वो लोग सर्वर पे जाके ही ट्राई कीजिए। So here we need to select language Python, okay, Python 3। आप लोग इसका यूज कर सकते हो ऑनलाइन GDB। लेट मी शेयर इन द चैट बॉक्स। Okay, what you guys need to do, you guys need to write a code, ठीक है, along with me, write a program to add, subtract, multiplication and division of numbers, of two numbers. Please try it guys। जिनके पास सर्वर का एक्सेस है वो सर्वर पे डायरेक्ट कीजिए, और जिनके पास सर्वर का एक्सेस नहीं है, in that case you can make use of this online GDB editor, okay। please guys try कीजिए इसको and let me know in the chat box, okay। chat box पे just thumbs up दीजिए if you have run your code successfully।
Sir, Yes, tell me. sir, I'm trying to open a file in the server, but it's not opening. Okay, please share your screen. Uh, Okay, press Control D. Control D. D for Delhi. Do not sir, do not use mouse. Okay. First, you need to activate your window by pressing Alt Tab. Okay. You need to activate your Git Bash. Okay. It is still not activated. I can still see the inactive window. You don't need to use mouse. Now it is activated. Now press Control D. Okay. Backspace. Press backspace. The entire string. Now type exit. EXIT. Enter. Can you see the Control D? It is a Control D. Okay. Now you can open your files. Okay. You can go into your directory, that is cd space /var /www/html and mir. Can someone please instruct her? Someone from the online candidates. How can she get into her directory? Someone from the audience. Can you please guide her? How can she get into her directory? Okay, she has done herself. मेरा तुमने प्रैक्टिस की है ना इस पे? Fine. sir, I had a file basic.py. It's not opening. Have you, how many times you have used this system? Because I I think you haven't used it since 2 weeks. Because no, sir. your folder should be inside, your file should be inside mir directory. Okay. So inside HTML, there is also one more directory, cdmir, isn't it? cdmir. And inside mir, you might have your files. Okay, I'll try. Okay, so regularly you need to practice, get to use to it, this Linux system. Okay, fine. You can unshare your screen. I'll just explain. ओके गाइस, सो लिनक्स पे कोडिंग कैसे करते हैं? मुझे मेरे पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना जरूरी है, तो cd space /var www.html juhi as I have logged in using jui's account. तो मैं अभी अपने फोल्डर के अंदर तो आ गया हूँ. हियर आई कैन टाइप माय प्रोग्राम. ओके, लेट्स से calci डॉट पाई. ओके, calci डॉट पाई. एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट्स से x equals to 5, y equals to 6 and z equals to x plus y. Okay, and here I can simply say print f, okay, formatted string,
and here I would say x plus curly braces y equals curly braces z. The candidates who are going to give session in Taiwade College, okay, they should focus how I am going to explain you all this thing. Okay, so you need to focus. Fine. Now, if I want to run that file, what I would say, Python 3 space calc dot py. Now it is showing me proper output. Similarly, if I want to copy this line, okay, similarly, if I want to copy this file line and paste it in the new line. So I would use the key YY for young and P for paste. Okay, YY for young is nothing but copy, and then P for paste. Okay, so YY P. Okay, so that's how I can copy and paste that line. Minus multiplication division. Okay, and here I can simply use direct formula here. Let's say x minus y, x multiplied by y, x divided by y. Okay, and let's try to run this. So it is showing me proper output. Now there is something interesting operator, that is double slash and modulus. Those operators are also available. So उसको use करके देखते हैं. Okay, एक काम करते हैं, यहाँ पर डबल स्लैश देते हैं, and let's use of double slash, and instead of slash we'll try to use percentage symbol. Okay, that's how we should use. Okay, so 5 by 6 it is showing me 0. Okay, 6000, no issue. And 5% 6, it is giving you modulus. Modulus means a remainder. Okay, so that's how you should code, guys. Okay, same thing, Miraya, and I think we have a few more participants. Miraya, Hinal, Saili, Ishan. You guys, please try this. If you have server access, try this on server only. Okay, and let me know once you are done. Miraya, So if you get stuck, it opened. it opened. Now it is working. Yes. Great. Saili, Hinal, Ishan, Nikhil, Ritika, Shubhangi, Suresh, you guys also please give me confirmation for this and use all the operators. Okay. यहाँ पर हम थोड़ा सा change करके देखते हैं. Let's say instead of 5, let's say 55. Okay. And in this case, how it is working. So that's how you should get the output. सभी लोग try करो, guys. I'll give you 5 more minutes to run this. If you have server access, please try it on server. If you don't have server access, then only use online GTB. I can see here who all have logged in. Okay, Ritika logged in, Juhi, my Meenal and Hinal. So few candidates have logged in. Other candidates are just here to see what is going on. They have just come here to see the JCP ki khudai. तो वही मैं करंट लॉगिन करना. Those who are done with this, they have another class work. Read input from user and convert this program. डायनेमिक में कन्वर्ट करना, यूजर से इनपुट ले.
Okay guys, those who are done with this program they can verify. जिनका नहीं हुआ वो लोग भी एक बार यहाँ पर attention दे दीजिए. So how can I get input from user? There is a function named input. You can simply say enter number 1. Similarly, input number 2. Let's try to run this. Okay, it got stuck because it is saying unsupported operand types for string and string. So whatever I input from keyboard, okay, whatever I insert from keyboard, it will be considered as a string. So उसको मुझे manually क्या करना पड़ेगा guys? Convert करना पड़ेगा integer में. इसको type casting, okay, या फिर type conversion भी बोलते हैं. So int में उसको convert कर देते हैं. Let's try to run one more time. Now it is working very fine. So that's how you can take input from user. Okay, one more operator we are going to see and then we'll take a short break guys. Okay, so that operator is power of operator. Okay, power of operator को कैसे यूज करेंगे हम? It's a num equals to 5 वैल्यू है और 5 का मुझे क्यूब देखना है. So what I can say, num multiple power of 3. So it is giving me properly the cube of that number. Okay, so that operator is nothing but power of. Okay, इसको ट्राई कीजिए गाइस. पावर ऑफ ऑपरेटर को भी ट्राई कीजिए. आई विल सी यू इन 10 मिनट. ओके, एक 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. यू कैन ट्राई दिस एंड वी विल कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स.
ओके गाइस, वेलकम बैक। एक जो ऑपरेटर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो डिवाइड मल्टीप्लाई। फाइन, लेट्स से आई हैव अ नंबर 2 डिवाइड बाय 10। ओके, 2 डिवाइड बाय 10। 10, तो इसको अगर ये करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 10 zeros are 0, I would say 2 is the remainder. तो अगर मुझे 2 as a remainder ये वैल्यू अगर चाहिए, so I can make use of this symbol. Okay, तो अगर मुझे 0 चाहिए, तो I can make use of this double slash symbol. Okay, मुझे exact calculation चाहिए, so I can make use of this slash. I think 0.5, I'm not sure, but let's see. Let's say 2 divided by 10. So 0.2, 0.2, not 0.5, it should be 0.2. And if I say 2 double dash 10, it is giving me 0, that is the quotient. Okay, and in case of 2 percentage 10, in this case it is giving me the remainder, that is, okay, let's say 1 2 3 4 percentage 10. If I say, it is giving me the remainder. Okay, what is the value for 1 2 3 4? Divide 10 should be 1 2 3. And what is the value for 1 2 3 4? Divide by 10, it should be exact calculation of that operation, 1 2 3 dot 4. Okay, so ये difference guys याद रखना, इंटरव्यू के टाइम पे भी शायद you might get this question. Okay, you might get this question at the time of interview also. चलो अभी what is our next topic? That is input. Input we have seen, so we don't need to see it again, because for taking user input we should use this input function. Okay, type conversion, one of the type conversion we have seen, that is string. Okay, sorry, the int, but there are some other type conversions also you can use. Let's say we'll take one input from user Python 3, x equals to input, enter number. Okay, so if I say 5, now let's check the type of x is, it is showing me string. Now input number, and this time we'll take, let's say, okay, this time we have seen that x is giving me, like type of x is giving me string, but what if I want to convert that into integer? So in that case, what I will say, I will simply say convert whatever input is coming, convert that into integer. So now if I check type of x is this. Okay, if I want to convert that into, let's say, float. Okay, float में अगर convert करना है तो let's say 5. So you can see it is showing me float. And if I try to access the x value, it is giving me the float value, that is 5.0. Float means a decimal point के साथ अगर कोई value आती है तो ठीक. Let's try with boolean. Okay, boolean के लिए हम try करके देखेंगे. Whatever input comes from user, will convert it into boolean. Okay, yeah, boolean. So enter number, let's say true. So now type of x should give me boolean. Okay, अगर मैं false input लेता हूँ, input message false, type of x is boolean. Okay, तो x को print करके देखते हैं, तो x is showing me true. It should not show me true, it should show me false. So boolean enter value. Fine, let's try with y. boolean में convert करना है input को. Okay, input को
false, and let's try. Oh, why is still showing me true? Not sure why. So type of y should show me boolean, but let me check with this why it is showing me false value. Okay, still showing true. I'll check that and we'll come back to you guys. वो false क्यों नहीं accept कर रहा है? Fine. The next thing is string में string with single quote. Okay, string with double quote also works, and there is something called as here dot. Okay, so string with single quote, string with double quote, you guys have seen this, but string with here dot ये क्या होता है? ये चीज अभी हम देखेंगे guys. Okay, so let's say I want to create a string str description. Okay, description equals to this is line 1, enter. Okay, see, it is giving me error on the same line. I wanted to write 3 lines of description. It is giving me error. So in that case, how can you write a multiple line string? Okay, in that case, how can you write multiple line string? So description equals to, let's try with triple quote, and this is line 1, enter. This is line 2, enter. This is last line. Okay, enter. Whatever symbols we have used at the start, that we need to use here. Now let's try to print that description. In this case it is showing me. ठीक, तो आपको अगर मल्टी लाइन कोई स्ट्रिंग लिखनी है, स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, सो इन दैट केस यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज हियर डॉक. ओके, हियर डॉक काफी टाइम पे यूज होती है. इन माय केस, मेरी कंपनी के अंदर ये रेगुलर बेसिस पे मैं जब भी किसी को मेल सेंड करना रहता है प्रोग्रामेटिकली, इफ आई वांट टू सेंड सम मेल, सो वहां पर जो हेडर होता है एंड आपका हाँ, हेडर तो सिंपल लाइन होती है, बट अगर आपको वो मेल की मैसेज जो बॉडी है वो मुझे स्टोर करके रखनी है, सो इन दैट केस वी मेजरली यूज दिस हियर डॉक ऑप्शन. और हियर डॉक ऑप्शन इज नॉट जस्ट अवेलेबल इन पाइथन, या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है. ठीक है, हियर डॉक ऑप्शन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है. हम देख सकते हो, देखो यहाँ पर हियर डॉक रूबी, पाइथन, शेल स्क्रिप्ट, लिनक्स, पीएचपी, सभी ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हियर डॉक अवेलेबल है. सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस हियर डॉक इफ यू वांट टू स्टोर multi-line string into a variable. Okay, into a variable. Chalo, next one is formatted string. We don't need to focus on this because you guys already know what is formatted string. यहाँ पर simply अगर एक चीज का ध्यान दिया जाए तो formatted string is nothing but a string which starts with prefix with f symbol, which is nothing but considered as a formatted string. And inside that string, if you want to access any variable's value, so you need to pass it in curly braces. Okay, you need to pass it in curly braces. So that is nothing but called as just make use of this formatted string to show a dynamic values inside the string. Okay, instead of concatenation, this is the best way to use string. Okay, now next and very important, string functions. Okay, next and very important is string functions. String functions जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं. हाँ बोलो मेरा. Sir, I'm not able to run anything. What are you running? That one you had given, like x plus y1. I did it 10 minutes ago, but it's still not running. But I haven't asked anything to run. Okay. Let me check what is happening on the server. Okay, average is 0. You should be able to run the code. No issue. Please share the screen. Let me check. Okay.
Press escape. So I'm pressing escape. It doesn't escape. Yeah, no issue. Press escape. Colon. Press escape again. Escape and colon and Q. Don't use W, just Q. Enter. Okay. Give me access. You might have opened the file in read mode. That's why it is showing. Fine. It was already open. Okay. You had to press FG instead of again opening it. Okay. Okay. You had to press FG, foreground. It was in the background. By pressing Ctrl Z, what happens? The program goes into background, BG. Okay. Let's try with Ctrl Z. Just a second. Ctrl Z. Fine. Now the program is in background. Okay. Yeah. If I press BG, it is showing. And in jobs also you can see the list of files. Now to bring it in foreground, what we say FG. And here I can change it. Here I can just try with this. Okay. Oh, by the way, where is Vivan? Mira? I think he's there. Vivan, are you there? Okay, no issue. We'll continue. I'll just share the recording after this. So guys, you can unshare your screen. Okay, guys. So strings, these are the very, very important functions available in string. So we are going to use majorly like which is being used majorly in the industry. Okay, those we are going to see. But apart from this, you might find so many functions available to manipulate string. Okay, so the first one, length. Okay, the first one is the length. And 3, go to the playground and let's create one string. Hello world. Okay, now if I want to find the length of that string, how can I find? I can make use of this len method, len function. Okay, method or function. So it is showing me 11, which is the correct. Okay, sometimes we need to count. Okay, how many like letters are there in the string. Okay, so in that case you can make use of this. Let's say अगर मुझे कोई पैन कार्ड का ओके चेक करना है कि एग्जैक्टली उसने कितने कैरेक्टर्स एंटर किए. सो इन दैट केस हाउ कैन आई मेक श्योर कि पैन कार्ड के लिए उसने करेक्ट यूज किया या नहीं. सो आई कैन सिंपली से लेंथ ऑफ दैट पैन कार्ड नंबर इक्वल्स टू 10 और नॉट. ओके, सो इन दैट केस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस लेंथ फंक्शन. ओके, चलो अपर str okay dot upper. Okay, this function, what it is giving me, it is giving me everything in capital letters, guys. It is giving me everything in capital letters. Okay, let's try the lower. It is giving me everything in lower case, guys. Okay, upper and lower. Capitalize. Okay, let's try with the capitalize. Let's manipulate string a little bit. This is normal statement. Okay, this is normal statement. str dot capitalize. So it is giving me capitalize मतलब first word का first letter वो capital कर दिया उसने. Okay, first word
का first letter it has capitalized. Now if I want to use a title, okay, title को use करके देखते हैं. Let's try this. So title में every word, okay, now every word it is converting into first letter of each word it is converting into caps. Okay, first letter of each word it is converting into caps. Now next, rain in Spain and find Spain. Okay, find function. Okay, next is find function. और find function क्या करता है? Let's say I have a string URL. Okay, URL. There is one project going on, so I'll make use of this. One of the team is developing this project, so I'll take this example. Okay, so they are using this, like यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, या साइड्स के वक्त वो हाईलाइटेड दिख रहा है, साइड्स प्लॉट्स के वक्त प्लॉट्स हाईलाइटेड दिखता है. So what I have asked them to check whether in URL you can find, if you find the admin/plots, whether admin/plots is available in that URL or not. So how can I check? What is the syntax? Dot find. Okay, string dot find. What string I need to find here? Admin/plots is available. Okay, it is available. That is why it is showing me. It is available at 31 character. Okay, 31 index number. Okay, if I try to find sites, admin/sites, it is giving you a -1. -1 means that substring, this substring is not found in URL, is not found in URL string. Okay. The next one is replace. How can I make use of this replace? Okay. So replace के case में, let's say string equals to hello. Okay. Now I want to replace that word. I want to replace that word with hello India. Okay, with India. So how can I make use of this? str dot replace what? Replace what? Word with India. Word with India. Okay. So try करके देखते हैं. It should be replace, not replace. And let's try to again. Yeah, it is now showing me hello India. Okay, replace will replace the source with the targeted string. Okay, this is nothing but a source with the targeted string. Okay, and it will replace that thing and return new string. Okay, return the new string. So similar to replace, we have find. This returns index number. This is main string which contains substring. Find substring. This returns index number if found, else return -1. This we have seen. Okay. Substring in this main string which contains substring returns boolean value. Okay. Substring. Okay. Substring एक बार try करके देखते हैं. Let's try the substring. str प्रिंट करते str dot sub string. Okay. Okay, substring. Okay. I think sub str is the function. I don't remember. Let me check. Google it. Substring in Python. Okay, substring in Python. So एक पहला एग्जांपल ही देख लेते हैं. String sub. Okay, there is nothing like substring. Not sure. There should be.
Let me check again because I haven't used this since long. Python has no substring methods like substring or substr. Instead, we use slice syntax to get parts of existing string. Okay, so I should like remove this thing. Okay, so नए वर्जन में हम लोग क्या करेंगे गाइस, अगर मेरे पास str है तो str का लेट से मुझे थर्ड कैरेक्टर के बाद सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहिए, तो हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस, एरे में जैसा होता है ना वैसे ही आपने यूज करना है. सो लेट्स से 3 एंड इस तरह से आप कर सकते हो. थर्ड स्ट्रिंग के बाद मुझे सारे, थर्ड लेटर के बाद मुझे सब कुछ चाहिए, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो. लेट से मुझे लास्ट के 3 नहीं चाहिए, लास्ट के 3 नहीं चाहिए, सो इन दैट केस लास्ट के 3 दे रहा है ये. सो स्टार्टिंग से सब कुछ, लेकिन लास्ट के 3 नहीं चाहिए. ओके, लास्ट के 3 नहीं चाहिए. कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, सो सबस्ट्रिंग आप इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे आप एरे के एलिमेंट्स निकालते हैं. हो सकता है लेट्स से हर एक नंबर, ठीक है, हर एक फोन नंबर में, हर एक फोन नंबर में क्या आ रहा है, 91 आ रहा है, 9172007007. ओके, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 10 डिजिट का ही नंबर अभी निकाल के रखना है. तो मैं क्या करूंगा गाइस, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस सबस्ट्रिंग to get the only 10 digit phone number? Anyone, can you please tell in the chat box? मुझे सिर्फ फोन नंबर चाहिए 9172007007, ये सिर्फ फोन नंबर चाहिए. Someone tell in the chat box by using. Very good, thanks Ritika. Let me take few more confirmation guys whether you have understood the substring part or not. Please share in the chat box whatever comes in your mind. No one? Fine. So phone. So let's try Ritika's solution. So that's how it is giving me simply the phone number. Okay. स्टार्टिंग में +91 +912 कुछ भी हो सकता है. इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, मुझे 10 डिजिट ही चाहिए. Let's say 10. Okay, not this way, -10 colon. Okay, so that's how you can make use of कि स्टार्टिंग में स्पेसेस वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, मुझे सिर्फ लास्ट के 10 डिजिट तक चाहिए. तो इन दैट केस यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन. ओके, you can make use of this function. So the correct solution was 3 colon and -10 colon. Phone 3 colon and phone -10. Okay,
These are the two solutions you can use to get exact phone number. Okay. So apart from these string functions, there is something called as mathematics function. Okay, math functions. Okay. So यहाँ पर math functions क्या करते हैं guys? Math functions क्या करते हैं? Let's say I want to round up. I want to round up any number. Let's say 7.3. This is number. So I want to round up. So how can I round up this? Round 7.3. ठीक है ना तेरा ना मेरा ऐसा बोलते हैं ना कि राउंड फिगर कर लेते हैं ठीक है 225.5 है तो उसको 26 कर देते हैं ठीक राउंड 25.5 26 ओके सो राउंड अप करना है तो राउंड फंक्शन एब्सोल्यूट लेट्स से x इक्वल्स टू 5 है y इक्वल्स टू 7 है एंड मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए डिफरेंस चाहिए मैं z इक्वल्स टू क्या करूंगा x माइनस y एंड z को प्रिंट करूंगा तो -2 दे रहा है वो बट इन अदर वे ओके इन अदर वे लेट्स से a इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस y तो अभी a की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वो मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस दे रहा है एग्जैक्ट डिफरेंस इट इज शोइंग ओके यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंस अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं इट्स math dot ceil in some cases you might need to use a ceiling okay तो एक above वैल्यू अगर आपको देखनी है ठीक है above वैल्यू अगर आपको देखनी है तो कैसे यूज करेंगे आप इसको math dot c 7.3 ठीक है पहले इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ को देन विल यूज ओके तो 7.3 का सील वैल्यू अगर देखेंगे हम तो वो होता है अब अप वैल्यू इज 8 एंड लोअर वैल्यू देखेंगे तो इट इज 7 ओके लोअर वैल्यू इट इज शोइंग 7 वैसे ही फॉर्मेट डेसिमल पॉइंट ओके फॉर्मेट डेसिमल पॉइंट इन सम केसेस इट्स अ रेडियस इक्वल्स टू 5 एंड इसका मुझे एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ओके 3.14 रेडियस ओके एंड एरिया की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं सिंपली 3 डिजिट आ रहा है मतलब 1 डेसिमल पॉइंट आ रहा है नो इशू सर्कमफरेंस निकालते हैं इक्वल्स टू 2 into 3.14 into रेडियस ओके सर्कमफरेंस यहाँ पे देखो गाइस बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है डॉट के बाद ठीक है बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स हो सकते तो इन दैट केस व्हाट यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सो प्रिंट f colon point to f okay colon point to f of डॉट फॉर्मेट ओके फॉर्मेट इस केस में बाद में यूज करना है डॉट एंड cr तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे बहुत शॉर्ट फॉर्म में वो चीज दे दी ठीक है लेट्स ट्राई विद द सेम थिंग विद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग circumference equals to ओके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लेगा क्या लेकिन 0.2 2 decimal so print के अंदर %2f that is fine this is also fine so everywhere it is showing the same solution which we have used here so
सो दिस इज द करेक्ट वन. ओके, आपको अगर ये यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे? लेट्स से circumference equals to this and then this. आप ऐसे कर सकते हो. इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको लिमिट कर देंगे. नाउ इफ आई प्रिंट सर, इट इज शोइंग मी प्रॉपर. ओके, तो आप इस तरह से उसको क्या करना, पहले वैल्यू निकाल लेना एंड देन उसको फॉर्मेट यूज करके आप उसको डेसिमल पॉइंट से क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो. आई चेक फॉर दैट फॉर्मेटेड सिंग, मतलब एफ के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. बट टिल नाउ, टिल देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मेट फंक्शन. ओके, फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो. सो अनदर वन. Okay. The next one is conditional statement. Okay. So before start with the conditional statement, यहाँ पर 4-5 टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हम, कंडीशनल स्टेटमेंट से लेकर 5 तक. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट से लेकर 5 तक हम 4-5 टॉपिक एक साथ कवर करने वाले. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 minutes and then we will resume. We'll take a short break of 5 minutes and then resume.
ओके, वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पे अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब वो चीज है जहां पर आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड एग्जीक्यूशन करना पड़े। सिचुएशन ट्रू है, सिचुएशन फॉल्स है, ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। इन दो नंबर्स को या फिर दो वेरिएबल्स को मुझे कंपेयर करना है। सो व्हाट आई कैन मेक यूज ऑफ इफ। ओके, इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। a इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b, I'd like to print the message that a is greatest. A is greatest. Else I want to print the message, print b is greatest. Okay, so in this case it is showing me b is greatest. Okay, तो conditional statement में आप ऐसे use कर सकते हैं। Let's say I want to compare one more variable. So in that case you need to use ladder if structure. Okay, in that case you need to use ladder if structure. तो सबसे पहले करते हैं if a is greater than b, एक separate condition लिखते हैं। If a is greater than b and a is greater than c, अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे a is greatest. Okay, else and if ऐसा आएगा सेकंड स्टेटमेंट, else and if। तो इसके लिए Sir, won't it be elif? यस, तो इसके लिए जो भी इसका डेवलपर है पाइथन का, उसने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया हमारा। ठीक, इससे 4-5 साल तो आपके सेव हो ही जाएंगे पूरी लाइफ में। ठीक, तो एलिफ, ओके, एलिफ यूज करेंगे हम एंड जस्ट कंपेयर टू वेरिएबल्स, क्योंकि ए को तो कंपेयर कर लिया हमने, ए ग्रेटेस्ट नहीं है तो b इज ग्रेटर देन c, इतना कंपेयर करेंगे एंड प्रिंट वी विल से b is greatest. And finally, if a is not greatest, b is not greatest, what else we have left with? Print c is greatest. Okay, c is greatest. Now it is showing me proper output. So that's how you can make use of this ladder if structure. This is called as ladder if structure. And if you find something like if inside the if, so in that case that if statement is nothing but called as nested if structure. Okay, nested if structure. So ladder if increment and decrement क्या होता है वो चीज कर रहे हैं। Let's say x equals to 5 and x equals to x plus 1. So x की वैल्यू हो जाएगी 6, बट अगर मैं x plus equals to 1 करता हूँ, so in that case also it is incrementing. ठीक, तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं x plus equals to 1. क्या मैं x plus equals to 2 कर सकता हूँ? Yes, that is also possible. So x plus equals to 2 किया तो 7 plus 2 it is giving me. So शॉर्ट हैंड में आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हो, बट डू नॉट like you don't need to use it compulsory. जितना हो सके आप सिंपल कोड लिखिए, दिस इज द सिंपलेस्ट कोड, क्योंकि आपके फेलो डेवलपर्स जो है उनको भी आपको समझाना है चीजें। सो डू नॉट मेक थिंग्स लाइक मेक थिंग्स। हाँ बोलो। So why are we doing x plus equal to 1, but why can't we do x plus 1 or x plus 2? X plus 1, yeah, we can do x We plus, can do that. yes, this is also working fine. Generally we increment by 1, okay, the roll number, id number. So in that case we use the incremental value plus 1. Generally we use plus 1. Okay, in C language, in C++, in Java also we usually increment the value with 1. Okay, but in case if you want to increase it by 2, that is also possible. Just you need to use the plus 2 plus 3, whatever number you want. Okay, so
you don't need to make things complicated. Keep the code very simple. Keep the code very simple. Why? Because you need to explain your code to your fellow developers as well. If you are not able to explain it to your fellow developers are not going to work on the project properly, and the project might get delayed. Okay, most of the projects get failed because people try to create complex code. Okay, if everybody is on the same page, then only use this short form. Yes, Vivan, tell me. Uh, so, so I was confused um the earlier one, the A plus the ladder if. So I was confused in how that works because how did you automatically get those like um three, I don't know what you call them, three When grades did you at a join, time? Vivan? I joined about uh, 15 minutes ago. That's Okay, why I fine. was asking you what. So you're not able to recall this thing, if else. No, That's what you're I saying? remember. I know. I remember. I'm just wondering what is. How did he get like those two those dots and the greater No, than no, sign? no. You don't need to worry about that thing. Dot, dot, dot. I am Okay. just using the playground. That is why these three arrows and those dots are coming. Okay. If I want to save this in file, it won't show any triple dot or something. It will simply print the new line. Okay. Fine. So to keep the code simple, we always use x plus 1. Okay, simply this kind of thing we are going to use. Now, similar to increment, there is something called as decrement. So if I want to decrement any value, let's say by 2 or x. So it is also, this is also okay. Right? Now, the next one is loop. And loop, we are going to use files for that. Okay, so let's create one file, loop dot y. Okay, loop dot y. So whoever has missed the initial part, they can refer this video recording. Okay, later I will share the links and you can practice the same. Whoever has missed the starting part. Okay, so now loops, in loops, let's say it should be hash. In loops, there are two types of loops available in the market, in industry, but most of the cases we are going to use for loop. Okay, I have been coding since 2006. Till now I have used, most of the time I have used for loop only. Okay, and it actually works very fine without any issue. For earlier it used to just for like iterating it for iteration when you know the limit. But right now most of the developers have created for loop for where you don't even have idea about the limit, then also you are going to use this for loop. Okay, in advanced programming languages. Okay, so here also what we are going to do, we are going to use the for loop. Let's say x in range, and generally we use I symbol for iteration. Okay, for I in range, let's say 0 comma 11. So what it will do, it will print all the values from 0 to less than 11. 0 to less than 11. Let's try to run this program. Run, run, run. It is running, it is running from what, from 0 to less than 11. From 0 to less than 11. Okay, so if I want to run something like from 0 to 1 to less than 11, so I can simply change this value from 0 to 1. Now let's try to print this, run this, and it is showing me properly. Now let's say with this loop, I want to print the value, the string as well. Let's say I space hello world, I space hello world, and
It is showing me properly hello world. Okay, let's say I want to print square of each number from 1 to 10. Square of each number from 1 to 10. I can simply say I multiplied by I. Okay, I multiplied by I. Should show me the square. Okay, now customer has raised or user has raised a request. He is saying I want output like the square of 1 is 1, the square of 2 is 4, the square of 3 is 9. This kind of output the user want. So in that case, what I can do, I can simply first write the output exactly in his whatever requirement he has given. So square of 1 is 1. So first try the exact hard-coded output. If hard-coded output is working, then come to the code and make changes and make it dynamic. So instead of 1, what I'll say now, I, and instead of second one, I would say I into I. Now let's try to run again. Now it is showing me. If you are going to try everything dynamically, then in that case, you should get stuck in between, or it might take more time to execute your code, guys. Okay, it might take more time to execute your code. Okay, now fine. Let's say I want to print square of all the numbers, but not 7. But not 7. So in that case, what I can do, I can simply use if condition. Let's say if i's value is 7, in that case, you should not execute the further part. You should not execute the further part. So what I will say continue from this statement. Continue from this statement. Don't execute further. If you found I value is 7, then in that case, you should continue the statement and do not execute the further lines. Do not execute further lines. So let's try to run this, and it should skip the square of 7. It is now skipping the square of 7. Let's say in some cases, I don't want to execute the statements once it found the i's value is 7. Once it found the i's value is 7, in that case, what I should do, instead of continue, I would say break. Instead of continue, what I would say, let's try. So why do we use continue? As per the requirement. Okay, let's say I have 10 students. Okay, let's say I have 10 students in a queue. Okay, so I want to make entry. Okay, I want to make entry in a register. Okay, and all the students are coming for let's say driving. Okay, to drive a car. All my students are coming to drive a car. So what is the condition? First condition, let's say everyone should have a driving license. Okay, and before that also, if I want to if someone knows how to drive, he should be above 18 years old. He should be above 18 years old. So what I will say, I will ask everyone to come. I'll check their ID, or I'll check the condition whether that their age is above 18 or not. If it is not 18 above, I don't mention it in my register, right? What I will say, I will simply ask that guy to leave, right? I will say, I will ask that guy to leave. If someone is not above 18, in that case, I won't allow him to enter into the driving the car. Fine. So in that case, we can make use of this continuous statement. Okay. Now, in case there are many people came to drive a car. Let's say not drive a car. Let's say if many people wants to get into the pub, okay, or a club, but there are very limited seats. There are very limited seats in a club. So in that case, what I would say, if I have more than 100, if people come more than 100, in that case, what I need to do, I need to break, right? I need to break that loop, because I cannot
allow more than 100 people in the club. Okay, but if everybody is above 18, then allow. If the person is not above 18, I won't allow him to enter into the club. Getting it? So to skip any part, you should use continue. Okay. To break the loop, you need to use break statement. Okay, let's try. Okay. Let's try with one practical example. Let's say students, users. Okay, users are coming and users. ठीक है, वो कितना एज है उनका, ये चीज मैं यहाँ पे रखता हूँ. सो 19, कुछ लोग 18, 21, 13, 16, 5. Yeah, we have 5 and 2 more. 26 and 23. Fine. So let's write a program. Okay. अब ये बाउंसर जो होते हैं ना, क्लब के बाहर खड़े रहते हैं बाउंसर्स, वो लोग ये प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ऐसा समझो. सो how many limit we have? We have only 5 members. Okay, we can allow only 5 members, guys. ये लूप तो पूरा चलेगा. Length of users ages. We can allow only 5 members in that club. Okay, so how can I make sure कि पांचों के पांचों members above 18 भी है. Okay, पांचों के पांचों members above 18 भी है. तो हम क्या कर सकते हैं? If that I, मतलब जो एक एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर, users ages of I, हम चेक करेंगे whether it is greater than or equals to 18. Whether it is greater than or equals to 18. If it is there, okay. If it is less than, okay. If it is less than 18, then we won't allow. So what I will say? Continue. Okay. What I will say? Continue. But in other case, if users, sorry, counter, I need to take counter as well. CNT equals to 5. Okay. If CNT equals to 5, I need to break. And let's print this. Print I. Okay. Now, how can we count the number of people? We'll take CNT equals to 0, and once we allow, we'll say CNT equals to CNT plus 1. Okay, we'll say CNT equals to CNT plus 1. Let's try to run this. So 1, 2, 5, and 6. It is showing only 1, 2, sorry. Users. User ages of. So only 18, 21, 26, and 23 are allowed. Others have got skipped. Okay, others have got skipped. Okay, so we are allowing only those candidates. We are allowing those candidates who are over 18 or above 18. Okay, and let's try to add a few more members with some more ages. Okay, let's say one more guy come with 20 age, one more guy come with 29 age. So according to your program, Miraya, please tell me whether 20 is allowed to enter into the club or not. Yes. And what about 29? Yes. Okay. Vivan, please tell me 29 is allowed to enter into club or not? No, sir. Okay. Let's try to run this. Okay. Now tell me, Miraya, why 29 is not
entered into the club? Because there are 5 people allowed. Exactly, because only 5 I can allow into the club. Okay, 5 members I can allow into the club. But sir, how does it choose which 5 to be allowed? Above 18, all members whose age is above 18, I am allowing them, right? Now, if Yes, but 29 is also above 18. but I have already, there is already limit of 5. 5 members are there in the club. Okay, one Oh, okay, like that. So it 20. goes in order. Exactly, right? So 5 already filled. So now I can say simply, now the club is full. Okay, let's try to print this. Okay. Print that message as well. Okay, now the club is full. Getting it? Okay. Simple. The have you got the difference between V1, the difference between continue and break? Have you understood? Yes, sir. Great, guys. So now the final thing is this while. Okay, while we will check. So while हम किस केस में while यूज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम while का यूज तब किया जाता है जब हमें लिमिट पता ही नहीं है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज while when we don't know the limit. ठीक है, तो उस केस में हम while का यूज कर सकते हैं. So let's say while dot py. Now if I want let's say I have few numbers. Let's say I want to print something from 1 to 10. Okay, so I equals to 0, I would say 1. In while I can simply put the condition, if I is greater than, I is less than 11, print the value of I. Print the value of I. Okay, let's try to run this. Python 3 y and oh my god, it is just incrementing non-stop. The infinite loop is there. So how can I increment the value? I equals to I plus 1. Just few minutes back we have checked this thing. Okay, just few minutes back we have checked this thing. So now if I run this code again, it is now coming properly. Okay, so what I have done, I have simply taken the variable before while. I have used that variable inside the while loop and try to put the condition which is going to terminate that loop. Okay, तो ये लूप टर्मिनेट करने के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखी? I less than 11. बट थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, यहां पर मैंने क्या किया, I equals to I plus 1 लिखा. अदरवाइज अगर मैं ये कंडीशन लिखता ही नहीं तो क्या होता गाइस, प्रिंट I तो हो जाता, बट I ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती. That is why it is used when your condition is false, then your loop will terminate, guys. So, sir, what is the difference between while and for and loop? Yeah, both are same. Okay, both are same. Okay, the like in a for loop you can simply write in a single line. Okay, in the for loop, we can simply write in a single line, but in while loop we need to manually adjust this thing, like I equals to 1 initialization. This increment part also we need to manage, the condition part also we need to manage. Okay, for loop is very simple, but in some cases while loop is very useful. Let's say I want to find each element, okay, each element from the number. Let's say num equals to 1 2 3 4, and I want to find
each element from that number. So num is greater than 0. Okay, let's just print num mod 10. Okay, num mod 10. Python 3. So it is still showing 4. Now how can I manipulate, guys? Because num will always come 4. Okay, num will always give me value num mod 10 always give me value 4, and num will be 1 2 3 4 only always. So what we need to do to manipulate this thing, num divide by divide by 10. Okay, now first time it will give me 1 2 3 4.4, second time it will give me 1 2.34, third time it will give me 1.2, and fourth time it will give me 1. So now let's try to run this. Now it is showing me like this. So let's try with double slash. So each time it is giving me now the last digit. Okay, but you will say we can do this in for loop also. But what if we don't have idea which number, how many digits of number user is going to enter? Okay, enter number, और वो कितने भी डिजिट का नंबर एंटर कर सकता है, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, बट अभी हमें पता नहीं है. तो इन दैट केस योर प्रोग्राम शुड नॉट फेल. If it is 2 digit, then also it should work. If it is 3 digit, it should work. If it is 4 digit, it should work. If it is 5 digit also, it should work. Okay, this type of situation is simply handled in can be simply handled in while loop, but it would be very difficult in your for loop case. Okay, so while loop में generally ऐसे cases में कभी-कभी use करना पड़ सकता है. ठीक, इस प्रोग्राम का गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट. Please take screenshot of this. So guys, pass we have just skipped the pass wala part. Pass we will I will tell you while teaching the object oriented programming. But apart from this, we have touched almost all the parts from here, from 1 to this. Okay, next week we are going to see the list part. Okay, and then functions as well. But we'll try to cover the list part only. And next week we are going to keep the workshop. Okay, so parallelly you guys need to practice with me. Okay, this was just a revision because there has been so many breaks in between, so many holidays also came, and now we are going to start this list wala part, this functions with workshop. Okay, so parallelly you guys need to follow along with me from next week. Okay guys, so that's it for now. If you got stuck in between, अगर कोई भी आपको कोई इश्यू आता है अगर वीडियो में भी देखते टाइम, so आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे ओके वो डाउट शेयर कर सकते हो, एंड मी आई और माय टीम विल बी देयर टू सॉल्व योर इश्यूज. ओके, मैं शेयर कर दूंगा लिंक विद इन एन आवर. जैसे ही प्रोसेस हो जाता है वीडियो, मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा जो भी यूट्यूब पे रहेगा. ठीक है, विवान प्लीज रेफर द वीडियो. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव डन, वही मैंने रिवाइज किया है. ठीक, बट एक बार फिर से वीडियो को 2x स्पीड में देख लेना. इफ आई एम माय स्पीड इज अ बिट स्लो, अगर नॉर्मल स्पीड में देख के भी समझ जाता है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. ओके, चलो, थैंक यू गाइस, see you next week with this remaining. Thank you, sir. Welcome.